Assalamu alaikum everybody. Good morning, good afternoon, good evening. I hope all of you are doing good. So we are back with a new vlog today. Where are we going today? Today it's 15th of August, Independence Day. We are riding to a dam project again. It is called Sri Ram Sagar Dam. And I don't know, the weather is extremely humid today. Maybe it will start raining, who knows, but we are carrying our rain visors as well, so no issues there. Absolutely all geared up and excited because it's been a while that I've gone on a ride, almost like 2 to 3 weeks. I hope you will enjoy this video. The first thing is fueling now, so we'll go ahead and do fueling. So who are the riders today? We are going with our usual gang: Varun, Rahul, Gaurav and Sahil. Sahil I haven't met. I'll be meeting him for the first time. I hope we have the best of the ride today. Always ride safe, always gear up for the ride. No lenience. I'm not wearing gloves yet, but I will wear because it's extremely humid, and I also have wind guards, so this hand guards, sorry, so those anyways will protect me. So the signal is open for the left here. I can go easily, not a problem. So guys, now I have met Varun. Varun is leading me. We are going to meet Gaurav, and then we are going to reach our meeting point where we are going to meet Rahul and Sahil. So total 5 riders today. 3, 4, 5, yes. I hope the weather treats us well. Yellow lights. Wow, these yellow lights look so awesome. Fog visibility, I don't think anything is better than a yellow light. White light usually reflects if there is too much fog, but yellow is the best. So you need to have 2 lights for sure, that is your fog lights, white and yellow, basic ones, which I have. If I have to upgrade, mostly I'll upgrade my headlight in the coming days. So looks like we have entered some green space. I am not able to recognize whether this is an army area or not, but it's pretty green and dark. Wow, this looks so good guys. भाई लोग, यहाँ पे देखो नज़ारा, ये जो है नाइट व्यू वाला है, जहाँ पे सिर्फ आपको बाइक की लाइटें दिखेंगी और कुछ नहीं है, इसीलिए यहाँ पे आपको लाइट टेस्ट करना इज़ द बेस्ट थिंग. ऐसे रोड्स पे आप टेस्ट कर सकते हैं आपकी लाइट कितनी थ्रो कर रही है, सब कुछ दिखाई दे रहा है या नहीं. मुझे तो थोड़ा सेटिस्फेक्शन है कि हाँ ठीक है, दिख रहा है काफ़ी कुछ. स्प्रेड अच्छी है प्रोजेक्टर्स की, although इतने पावरफुल नहीं है, बट हाँ ठीक है.
काम चला सकते हैं, बट हाई स्पीड में दिक्कत हो जाएगी। हाई स्पीड के लिए थोड़ा ज़्यादा पावर चाहिए होगा अपने को। हाँ, बट अगर सामने वरुण भाई जैसी गाड़ी हो जिसके अंदर इतने सारे लाइट्स लगे हो तो अपने को क्या चिंता, हम तो फॉलो कर लेंगे आराम से। इट इज़ लुकिंग सो सरियल एट दिस मोमेंट। हाँ, मतलब जितना सारा स्ट्रेस बस जो भी होता है ना, ऐसा मतलब ऐसी जगह पे आके बाइक पे बहुत ही रिलैक्स फील होता है। मैं तो खुद अभी से रिलैक्स फील करने लगा हूँ, अभी तो राइड बाकी है। बट हाँ, अगर कुछ स्पेशल मज़ा करना है तो सुबह ज़रूर उठना, वरना दिन में कोई मज़ा नहीं है भाई। ये जो सुबह सुबह होती है 4 से लेके 6 बजे वाला टाइम, इस टाइम पे अगर आप उठ जाओ और कोई भी एक्टिविटी करो, वॉकिंग करो, राइडिंग करो, साइकिलिंग करो, कुछ भी करो, बहुत ही ज़्यादा उसका फ़ायदा होता है आपको लाइफ में। एंड यू फील रिफ्रेश्ड। ये मॉर्निंग में अपने ब्रेन को जब किक स्टार्ट प्रॉपरली होता है ना, तो दिन भर वो अच्छे से काम करता है। और फिर अगर तुम जल्दी उठते हो तो ऑब्वियसली तुमको जल्दी सोना पड़ेगा। भाई लोग, हमारी राइड हो चुकी है शुरू। मेरे सामने है साहिल, वरुण, राहुल और अपना हाइनेस गौरव। भूख तो लग रही है भाई सुबह सुबह। इंशाल्लाह द नेक्स्ट स्टॉप वुड बी टू स्टॉप नेक्स्ट स्टॉप वुड बी टू स्टॉप फॉर द टी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ 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 हाँ, ये देखो ये देखो, पानी देखो। बट द वाटर इज़ डर्टी, हाँ, इट्स नॉट क्लीन, इट्स स्मेलिंग रियली रियली बैड। एंड I think there is some chemical factory near this. I can feel that in the air. So भाई लोग, टाइम हो रहा है अभी 6:02 और हमारी रीफ्यूलिंग हो गई है। अभी टैंक फुल है, रास्ता बस सीधे सीधे ही जाना है। हाँ, इस हवा को लेना है यार थोड़ा। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा आ रही है, मज़ा आएगा। कंपनी के बारे में सही से बोलोगे यूट्यूब पे डालते हैं। सो भाई लोग, वक्त हो चुका है अभी 6:20 और हमारी हो गई है चाय की रिक्वायरमेंट पूरी। हम निकल रहे हैं राइड के लिए और भगाना शुरू हो चुका है। हाईवे बहुत ही सुंदर है हमारे सामने और हमारे पीछे हमारे राइडर भाई लोग फॉलो करते हुए। ये हुई ना बात। जितना स्ट्रेस है सारा सब निकल। हर किसी को बाइक राइड करना चाहिए, मैं तो बोलता हूँ। जो भी दिल में परेशानियां हो, जब आप ये हवा से बातें करते हुए जाते हो ना, तो
सुकून अलग ही होता है। H44 है और स्टेट हाईवे 43 है, AH43। Time to destination is about 9 o'clock. Time is 6:47 now. We have cops in front of us. तो ये हमारे लाइनअप है बाइकर्स। वरुण भाई जेवा, और ये हमारे डार्क वेडर हमारे राहुल। और ये हम।
uncommon bike is there, you have to interview that guy. That we will do it after this. वो special interview है अपने लिए. हाँ, सुपर मीटियर का भी I have done almost 18,000 kilometers and the experience has been good and bad both. So good in terms of it's a perfectly cruising machine. Five things you want to say. The first thing is the engine. It is tried and tested, very highly reliable engine. You can continuously cruise for long hours. And second thing is I think the overall build quality. It's perfectly made for highway touring. Based on the ground clearance, the tire width, and even the rake angle of the front suspension, everything is perfect for as for a cruiser. And yeah, you need to get a touring seat. If you have the touring seat, it becomes more comfortable. And yeah, I think that is pretty much all the good things. And you can customize it as you want. What do you want to change? One thing which in this which you don't like. One thing that I would like to change is basically having a better quality of chain sprocket. And I think suspension, yeah, suspension. There are aftermarket suspensions, so if something of that type or caliber would be provided, it would have been good. Those two things. Thank you so much, Varun bhai. That was a great, and Varun bhai has done almost 18,000 plus kilometers on this bike. Okay. No, We are Rahul. very- Rahul, we just are- two words about your Super Meteor 650. My Super Meteor 650 The most towards volatile Super Meteor. Always changing. Every time we look Every time looks different. most volatile super weekend. स्टार है भाई वो, मतलब So, एक look पे नहीं रहेगा. I've done close to 13,000 kilometers on it. So I'm very happy while sitting on that bike. I'll forget all my stress. Yeah, that's a good thing actually. Why do you ride? Why do you ride? You know, stress relief Stress relief. mainly. Meditation. No, not meditation, yeah. Meditation with open eyes and all. We need to be alert while riding. Yeah, correct. Let's cover your bike. Come. So this is Rahul's bike. Let's take some closer. So this is Rahul's bike. So he's got what lights is it? HJG. How many watts? 70 watts. 70 watts, and he's got this small projector bulbs also, which is nice. These are for city ride and these are for highway. Highway, right? And this looks different, no? This Leg crash is guard, from Bikeology. Bikeology leg guard. Nice. It looks very nice. Seat, customized seat, and vehicle looks sleek. Stock exhaust. Stock exhaust. Not Yes. interested to change into. And this is something which Rahul did very nice, which I like. This one, this foot picks. Fantastic. So that's Rahul for you guys. And this is what Sri Ram Sagar project. There is no end to this project. If you see, it looks as if it's in infinity, never ending. I can't see the end of this. Wow. खरीदने का रीजन क्या था वो भी बता. खरीदने का रीज़न ये था बेसिकली आई हैड टू चूज between this and the interceptor and then I thought to myself, okay, if I'm going to take the interceptor, I'm not going to be riding it to places that are 300 or 400 kilometers away, right? Because the seating positions, let's be honest, this is way superior and this is a cruiser, right? So also another thing that I noticed was it's basically the same engine, so I thought I'm not missing out on anything. And the drawback of this over the interceptor slash super meteor, I mean GT, is that this is 40 or 50 kilos heavier than the than those. And I really don't have much going on here. I think this is the only thing that is aftermarket. That's HJG. Yes, it is. And then I intend to change the
silencer in the future, and if I do it, it's probably going to be the Rhino racing one because that's really pretty. And also one of the things that I noticed in your bike was you have those lights flashing at us. That's really good, I think. Strobe lights. Yeah, it's strobe good lights. for actually Yeah, braking and and visibility. I might also add this one. It looks really good. Yeah. This is required for your long rides so that you Yes, can put any bag. I know. You can- And if there's anything that I wish this bike could change, if there's anything that can change, I would say that the headlights, they're not the best. Hmm. But the ones you get default, it's not the best. I mean, I know this is the only one, I think, na, जो Royal Enfield को provide कर दिया, that comes, that is LED. Yes. No, I mean that's, we are making some progress, but again, और वो अगर थोड़ा bright होता by default, yeah, it could have been better. You have not removed this cap. No, I have not actually. So one is Do the honors. because one is anyways gone. Yeah. So we can throw this one so the look comes clean. Yes, it does. And it was really fun driving here. I really enjoyed my ride with you guys, and Thank you. yeah, it was really fun. I think that will be it. Different from what you experienced with Royal Enfield, guys. Yes, definitely. I mean, this one was more chill, I must say. Hmm. मतलब हमने अपने अपने हिसाब से स्टॉप लिए है इसमें, Correct. and then And उसके you बाद, tested the limits of the bike. yeah, I sure did. What speed did you hit today? I think 150, 160, 160. I remember 160. I mean, I also have the Wingman installed on it, Okay. so I can actually go back and look. Yeah, good. Yes. Pay. Yeah, Sorry, yeah. I'm not going to show it for sure. But video will be there. Watch the video. Yeah, sure. Okay, so that Yeah. was Sahil and his experience with Super Meteor 650. So let's stay tuned. So गौरव, आपके पास होंडा हाइनस है, ये है हमारे गौरव Yes, sir. जो राइड करते हैं CB350 हाइनस। कैसा एक्सपीरियंस है आपका गौरव? तो मेरे को हो गया इसको ओन करते हुए 1.5 years ऑलमोस्ट, और अभी तक का एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया है। मतलब सबसे अच्छी चीज़ ये कि होंडा की मतलब इंजन की रिलायबिलिटी बहुत अच्छी रहती है, तो गाड़ी बहुत स्मूथ है। मतलब आई से कि मतलब 650 से कंपेयर करेंगे तो जाहिर सी बात है पावर कम रहता है क्योंकि 350 सीसी इंजन है, बट द स्मूथनेस विच विल गेट इन दिस बाइक एंड द थंब व्हेन यू विल लाइक एक्सेलरेट, that you won't get I think in any other bike. So that is the plus point of this bike, and also the tension free mind which you can have when if you have this highness, right? And So I think mileage is also very good. yeah, mileage is also nice. I think I am getting around like close to 34 35 like Yeah, if I'm it's riding very good. properly. Yeah, So this is a bike for city as well as on highways. yeah, Both you can use. you can use it for cities as well as highways, but if you are like aspirational then you may have to switch it for like a bigger cc engine, but yeah, it can fulfill your needs, not an issue. Great. Yeah. And when did you purchase this? Last year, Last year. April. So for how many kilometers done? I have completed 6,000. 6,000. 6,000. Nice. Yeah. Superb. Fantastic. So that was Gaurav, guys. Thank you guys. Gaurav is riding with us very regularly, and he's young lot which we have here. And Gaurav and Sahil. Sahil is actually much younger than Gaurav now. Sahil आपको कॉम्प्लेक्स देगा. 4 साल छोटे हो. Yeah. पूरा डिफरेंट लग रहा है. इंस्टेंट पिकअप ले रही है आपको. क्लच कैसा लगा? वरुण को भी चलाना है. You want to ride? चलाया तो ना. इतना कचरा मत फेंको भाई लोग, जो भी यहाँ पे आ रहे हो प्लीज जगह को साफ रखिए. कचरा देखिए कितना सारा है यहाँ पे. दिस इज वेरी बैड, वेरी वेरी बैड.
घूमने आओ लेकिन इतना कचरा मत डालो कहीं पे। There is nothing more here. You can just come for a ride, see this place, and then leave, because I see there is a small village here. Not much of food joints also were visible on the way. This is too big. मुझे एक्चुअली समझ नहीं आ रहा है कि इसका मतलब एंड किस तरफ है। उस वहाँ पे थोड़ा मुझे लैंड दिख रहा है, बट आई थिंक बाकी बीच में से तो इट इज़ ह्यूज। We are riding on the dam road. Yes, this is the dam road. ये भी बोल सकते हैं ना, डैम रोड। This looks nice from here. यहाँ से बढ़िया दिख रहा है यार, बढ़िया दिख रहा है यहाँ से। सो फाइनली भाई लोग, हमको एक रास्ता मिल गया है जो पानी के पास तक हम जा सकते हैं यहाँ से। वाओ, दिस इज नाइस। अच्छी खासी लोकेशन मिल गई है। हमने उधर बहुत टाइम ये किया था, बट दिस इज द पेनल्टीमेट लोकेशन नियर द वाटर। इतनी दूर आने का चलो हमको कुछ असर तो मिला। दिस इज अ कूल प्लेस। तो गाइज, हम लोग आ गए हैं श्री राम सागर की प्रोजेक्ट के अंदर। हमको एक बहुत ही खूबसूरत स्पॉट मिला जो तीनों साइड यू कैन सी देयर इज वाटर एंड इट लुक्स सरियल। यू कैन सी ए स्मॉल फिशिंग बोट बिहाइंड मी। सो ये है हमारे बाइक्स की फ़ोटो सेशन चलती हुई। बालाकृष्ण, हाँ राजेश सर आ रहे हैं थोड़ा बहुत। Okay, you face this side also. I will camera go. Okay. Stand here. राजेश भाई BTS बना रहे हैं। इधर इस तरफ से लेके आवा, मैं इधर से लेके आऊँ। तो we'll go there. We'll do that उधर टर्निंग में भी ठीक है। हाँ बोले।
freedom tight. Wind against our skin, visions blurry spin. Nights are only kin, adrenaline begins. Riding with the night, chasing endless light. Bikers in the flight, stars are shining bright. Speeding down the lanes, echoes in our veins. Break from all the chains, only thrill remains. Moonlit shadows cast, past is fading fast. Moments never last, leave it in the past. When the sky is so high, we defy and fly. Roots beneath our sight, never say goodbye. भाई लोग, हमारा हो गया है लंच। अर्ली लंच कर लिया हमने, क्योंकि ब्रेकफास्ट का टाइम काफ़ी निकल चुका था और हमको लग रही थी भूख दबा के, तो हमने लंच किया एक अच्छे से राजस्थानी ढाबा, देसी स्टाइल ढाबे में, नॉट द फैंसी वन। मज़ा आया बैठ के थोड़ा पलंग पे, वहाँ पे आराम से बैठने में। ऊपर से बारिश भी हो रही थी, तो इट वॉज ए गुड ब्रेक. So now we have started showing about 187 kilometers now, showing 3 hours 38 minutes. So ideally I should reach home by 4. थोड़ा तेज़ चलेंगे तो शायद हम जल्दी जाएंगे इंशाल्लाह. राइडर्स भाई लोग, आज की हमारी राइड अच्छी रही. अभी घर 104 किलोमीटर दूर है एंड मैं फ्यूलिंग के लिए रुका था, तो ये लोग आगे निकल लिए. बारिश हो रही थी रास्ते में, तो कैमरा को अंदर रखना पड़ा, फिर अभी मैंने निकाला है उसको. होपफुली आई शुड बी होम बाय 3:48 या फिर उससे पहले ही. ऑल गुड. बट आज के वीडियो में मैंने ये नहीं बोला कि प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि वो आप करोगे क्योंकि आप इतना प्यार जो देते हो अपने मोटो ब्लॉगिंग भाई को. इंशाल्लाह we'll catch you soon in a next ride and we will try to show you something new. I hope आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा. अगर पसंद आया तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिनको भी मोटो ब्लॉग्स और ट्रैवल ब्लॉग्स देखने में मज़ा आता हो. बस आज के लिए इतना ही. शब्बा खैर, शुभ रात्रि, गुड इवनिंग, गुड नाइट.